So welcome back to another episode of the Invincible Journey and we know हम लोग बहुत टाइम बाद शूट कर रहे हैं, बहुत टाइम बाद वी आर ब्रिंगिंग अप विद अ न्यू एपिसोड। तो इतने 6 एपिसोड शूट करने के बाद बहुत लंबा ब्रेक हो गया था, तो उसके लिए बनाए रखे, सब्सक्राइबर्स ड्रॉप नहीं हुआ, फॉलोवर्स ड्रॉप नहीं हुआ, उसके लिए थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आज what better start than to have Aadesh Kenia with us, who can see sports through his lens and उसने जिस तरीके से स्पोर्ट्स को देखा है अपने लेंस से, अपने छोटे से कैमरा से, तो it holds volume for the sports industry. And who is Aadesh Kenia for you? So Aadesh Kenia started photography from 2016 and अभी 6 साल हो गए हैं वो फोटोग्राफी में है, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी नीश पकड़ के चल रहे हैं। एंड शुरुआत उनकी हुई थी कॉलेज में एक स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट करते करते, लोग खेल रहे हैं स्पोर्ट्स के बारे में, उसको शूट करते करते उन्होंने शुरू की थी। एंड नाउ ही हैज बीन ऑलमोस्ट having really good assignments in his life, and starting with the AFC Asian Women's Cup Women's Tournament in 2022. He was also a part of Ambernath United, who is one of the top local teams in Mumbai, who have almost won everything. Almost भी नहीं, सब कुछ जीत लिया वो लोग ने अभी मुंबई में। And also the team is representing Mumbai at the I-League Division 2. उसके बाद he was also associated with their women's team, that is the Mumbai Knights, who have won the FIFA Women's League 2022, and they are going to represent Maharashtra in the Hero IWL, that is Indian Women's League, in 2023. He was also a part of some young squad, young players like GMSC and Mumbai Ultras, and also his major achievements, which were with the news sports portal, which was the football counter. And many people in Mumbai, he's a local name in Mumbai because बहुत सारे लोग आदेश को ही बुलाते हैं बहुत सारे असाइनमेंट्स में। एंड पर्सनली भी मैं आदेश को बहुत सालों से जानता हूँ। एंड द थिंग इज वी आर हैप्पी Almost एंड six, ऑनर्ड, 7 years. 6-7 years we know each other. एंड उसके बाद अभी बहुत सारे असाइनमेंट्स और आएंगे, वो धीरे धीरे आदेश बताएंगे आपको, बट तब तक के लिए वी नीड टू कीप क्वाइट एंड इट्स अ सीक्रेट। बट थैंक यू आदेश फॉर योर टाइम, एंड Most welcome. Most आई welcome. होप वी आर हैविंग अ गुड कॉन्वर्जेशन। एंड बिफोर वी स्टार्ट, मैं ये चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ कि दिस इज अ इम्प्रॉम्प्टू डिस्कशन। ऐसा हम लोग ने कुछ स्क्रिप्ट नहीं किया है, कुछ प्लान नहीं किया। एंड आदेश वॉज द फर्स्ट गेस्ट ऑन द शो जिसको मैंने स्क्रिप्ट नहीं दी है कि दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आर गोइंग टू बी आस्क्ड, and he is the first one to do that impromptu with me. So thank you Adesh for it, and I hope we have a good discussion. Yep. Surely we will do it. Yeah. So before मैं इंट्रोडक्शन भी दे रहा था, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोग मुंबई में जानते हैं, एंड आई गेस बहुत सारे लोग देखेंगे भी, बिकॉज पीपल हैव जस्ट टेक्स्टेड यू, आई फील कि भाई फोटोज भेज दे, भाई फोटोज चाहिए। There are more text from people like photos based than Dr. Batra's spam mails. Exactly. So basically, before all these stuffs, photography is a vast industry, Yep. and you have hold sports as a niche. So when was the time you decided कि sports में ही कुछ करना है, या sports photography ही, या फिर action photography ही मैं pursue करना चाहता हूँ? When was it? When was that thought? Yes, see the thing is कि one of my friend named Nisak, वो मुझे मुंबई एफसी का एक गेम में लेके गया था, Okay. and it was like my first I-League game which I watched from the stadium. Right. So he introduced me to a few players like ये है, ये यहाँ पे खेलता है, he plays for the Indian team. So and the match was really well. Mumbai won the game, and I saw कि यार मैं खेल तो नहीं सकता, but at least I want to experience once in a life में ऐसा एक बार ऐसा experience करना है कि मैं टीम का एक पार्ट रह सकूं, like however being a manager, and like I didn't know exactly like what kind of भी कैसे बताऊं मैं भी, एक्सपोजर क्या रहेगा, या फिर कैसे ज्वाइन कर not सकूं? not exposure, I'm saying कि like क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं, Right. like I didn't know कि मैनेजर को छोड़ के मैनेजर भी रहता है, Mhm. फिजियो भी रहता है, Mhm. स्पोर्ट्स फोटोग्राफर भी एक्चुअली टीम का रहता है. I didn't know these all things. The Okay. thing is कि I started as like मैं फिल्म मेकिंग लाइन में था, तो आई जस्ट बॉट अ कैमरा एंड आई एम लाइक खरीद लिया, अभी क्या करना है भाई, तो ऐसे ही शुरू किया. राइट। तो बेसिकली अभी यू हाईलाइटेड कि यू वर इन अ फिल्म मेकिंग लाइन, और फिर कैमरा लाके शुरू कर दिया। या तो डू यू रिमेम्बर द फर्स्ट गेम जो यू शॉट
in a photography thing, like photography career में वो पहला game जो you captured with your camera, do you remember that? And share us the experience कि वो game में क्या मतलब, क्योंकि you told me that you were in a filmmaking line, and filmmaking में जैसे हम्म, shots रहते हैं या जैसे कैमरा सेटअप रहता है बहुत अलग होता है, एंड स्पोर्ट्स में तो बहुत अलग होता है. विद इन अ फ्रैक्शन हम्म, ऑफ सेकंड या तो यू गेट द शॉट या यू डोंट गेट द शॉट. तो वो हम्म. पहला इंस्टेंट, पहला एक्सपीरियंस कैसा था? To be honest, first experience mein I only had my phone. I didn't have the camera. In ओह, fact, I was like thinking to buy a camera. ओके. And मेरे कॉलेज के गेम के लिए आई वेंट टू द सेंट फ्रांसिस ग्राउंड बोरिवली. एंड मैं फोन से ही ऐसे शूट कर रहा था एंड आई गॉट फ्यू वन और टू गुड फोटोग्राफ्स. So and few of the teammates they were saying कि like to film making में कैमरा ले ले. Even few of the classmates were saying. I thought चलो लेके देखते हैं क्या होगा देखते हैं. I bought and started shooting. That's how I practiced. And football वैसे ही मतलब मेरे जितने भी friends हैं most of them are footballers. So I thought like चलो if I they post any of the photos which I click and if they are happy तो मुझे मन करने लगा let's try something new. Like मेरे friend circles में everyone was doing something different. I'm doing something different. Yeah, that's really good. And एक point है highlight करना चाहता हूँ to whoever is listening to us कि you don't need a proper equipment or setup to begin something. तो जैसे Yeah. आदेश ने अभी बताया that he started clicking photographs and capturing photographs through his phone. तो ये चीज़ एक बहुत इंस्पिरेशनल है. एंड अभी अभी ही ओन्स लाइक ऑलमोस्ट इतने महंगे-महंगे लेंसेज़ है उसके पास, इतने महंगे-महंगे चीज़ें है उसके पास. इतने भी तो महंगे नहीं है उससे भी महंगे रहते हैं. so it's a journey for him. It's a journey for him, and people who know him or who are listening to him are really proud of his journey, and people really love this side of him. तो बेसिकली एक चीज़ जानना चाहते हैं कि जो स्पोर्ट्स फोटोग्राफर्स है, वो लोग को तो बहुत सारे मैसेजेस यही आते हैं कि असाइनमेंट इधर है, फोटोग्राफ्स भेज दे, लिंक भेज दे, ये चीज़ भेज दे. बट दे डोंट नो द जर्नी कि वो कैप्चर करने में क्या चैलेंजेस आए, या वो कैप्चर करने में कितने ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे पुश करना पड़ा खुद को. तो ऐसा कौन-सा चैलेंजेस यू फेस्ड व्हाइल क्लिकिंग फोटोग्राफ्स और व्हाइल एसोसिएटिंग विद टीम्स? ऐसा कौन-सा चैलेंज फेस करना पड़ा जहाँ पे यू हैड टू गेट अ राइट शॉट बट यू डिड नॉट, या फिर बहुत सारे ऐसे अप्स एंड डाउन्स भी हो रहेंगे? सो टॉक अस थ्रू दैट जर्नी. So the journey is very like बहुत ही अप्स एंड डाउन वाला जर्नी है. लाइक कभी कभी फोटो मिल जाता है. स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है कि यू आर एट अ प्रैक्टिस फेज. तो कभी कभी फोटोज अच्छा मिल जाता है कभी कभी नहीं मिलता. इट्स फाइन. द मोस्ट द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई यूज्ड टू फेस बिफोर वाज टू गेट द accreditation. Like I didn't used to get permission to shoot. Like राइट. until and unless I'm not working with any association or anything, I won't get any accreditation to shoot हुँ, the game. हुँ, हुँ. So that's the major factor now. I think so. Accreditation mil jata hai. Like it's much better for the photographers nowadays. I see so many of them clicking the matches and they're या. really having good photos. Like ऐसा लग रहा है भाई मेरा धंधा बंद होने वाला है. नहीं, 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 तेरा धंधा बंद तो नहीं हो सकता है. बट द थिंग इज़ एक चीज़ यहाँ पे अभी अभी जो स्पोर्ट्स फोटोग्राफी का जो है, एंड अभी जो इक्विपमेंट पे पीपल आर शूटिंग एंड बहुत सारा कंटेंट पे ध्यान दे रहे हैं स्पोर्ट्स टीम्स आल्सो, कि दे नीड फोटोग्राफ्स, रील्स बना रहे हैं या गोप्रो से शूट कर रहे हैं, एक्शन कैमरा से शूट कर रहे हैं. दे नीड दैट लुक थ्रू द लेंस थिंग. But I know a major, and people I've highlighted in the introduction also, and people in Mumbai also know that you were associated with Football Counter, which was Yeah, I yeah. guess yeah, I guess the first association which you was collaborated with. Was it the first one or उसके पहले भी कोई था? I no, not the first one actually. Before that, I worked for like Mira Binder FC, हम्म, which is located in Mira Road. And हम्म, before them, I used to work for Pile Pale Premier League. It was हम्म, just like one of the most known football leagues in exactly. Bombay. Sorry, Mumbai. And yeah, like because of VPPL only, I हम्म, got to know a lot about Mumbai football, and I'm like, okay, that's really interesting. It would be really fun to cover the games. Like I used हम्म, to call the players and tell कि if तुम लोगों का कोई game होगा, let me know. I'll do and like I come and cover your games. I'll click some photographs for you. I don't need any money for that. ऐसा मैं something around 1.5 years तक मैंने ऐसे ही फ्री में बहुत लोगों के लिए काम किया है. हम्म. That's So how I began. दिस इज़ सॉरी टू कट यू, बट ये चीज़ मैं Yeah, no पॉइंट problem. करना चाहता हूँ, ये चीज़ मैं पॉइंट करना चाहता हूँ बिकॉज़ आई हैव नोन हिम फॉर लाइक 7 इयर्स नाउ, एंड एवरी गेम आई हैव सीन आदेश मतलब टीम से पहले वो पहुँच जाता है.
and he likes to cover things and stuff like that. And कभी कभी मुझे तो पता चल रहा है कि अभी पता चल रहा है that वो freelance में इतना free में भी उसने काम किया, free में भी इतना shoot किया है. So I just want to appeal to everyone कि 1.5 year जो भी अगर struggle phase आ रहा है या फिर you are freelancing or doing things, तो पहले पहले शुरू में free में ही काम करना चाहिए, and then you have to progress. But how did football counter happen उस दौरान? So the thing is कि like I wanted to do this thing and it was only football counter who was doing it in the Mumbai at the very large scale. I think so. अभी तो और भी 2-3 और आ गए हैं. हाँ, I don't know the name exactly. Few there 2-3 है और but वो time पे they were the only one who used to cover entire Mumbai football. exactly. Like so my friends used to tell me कि ऐसा ऐसा एक company है. Why don't you join them? like okay try करते हैं. So उनके लिए भी as a freelancer I joined and Parel का ground how it was like mud वाला ground है and lower division leagues वहाँ होते हैं, तो वहाँ से ही मैंने start किया था. लगा ठीक है, अच्छा experience है ये वो. And later on I started doing more freelance works for them and all of the sudden I had a call, we can hire you as a full time. Okay, let's do it. So I worked for almost like 5.5 years for them. And yeah, That's I decided to quit because I had few more plans, but it initially didn't go as planned. It didn't happen. So yeah, but I'm still happy covering all the games. Of course, of course. So, जैसे you said that you worked with them for almost 5.5 years, and also VPPL भी किया था, Ville Parle Premier League, and also Mira Bhainder League and stuff. So, do you remember the first official paycheck as a sports photographer? Do you remember that moment? And Yes, how was it? कितने amount का था वो? it was like Ville Parle Premier League का ही था. हम्म, I'll be honest, I guess around 16-17 days non-stop assignment tha, and I had the first paycheck of rupees 4,000 for entire tournament, For not for a 16, day. 17 days, like for 16, Yeah, 17 days. Yeah. 16-17 days का I got like 4,000 rupees. अभी के लिए तो मुझे लोग बोलेंगे अबे क्या है इतने के लिए का काम कर रहा है, but the moment I received that I was like अरे भाई मेहनत का काम है यार, बहुत पसीना खाना पड़ता है. Of course, of And course. And I like I have also seen him, and when he used to come on the ground also, तो बहुत ज़्यादा ऐसे bags में इतना lenses, memory cards, chargers, ये सब adapters and stuffs like that लेके आता था. And 16-17 days का सिर्फ 4,000 मिलना वो time पे, I guess विले पार्ले प्रीमियर लीग बहुत पहले की बात रहेगी वो, obviously 6 years. it was actually the last season of VPPL, and Mhm. it was very well-known league. But the thing is, I didn't have any like very strong resume. In fact, that was the first paid assignment, to be honest. And I had nothing in my CV, so I was like, "Bhai, जो भी दोगे चलेगा. I just want my resume." Right, मुझे right. मेरा resume से मतलब. Right, but those who are listening to us in Mumbai, they know that VPPL Ville Parle Premier League was a huge was on a large scale. Like पहला ऐसा टूर्नामेंट था जो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे था, एंड उसमें छोटा अमाउंट मिलना एंड स्टफ्स लाइक दैट, तो पीपल गेट डीमोटिवेटेड बाय थिंग्स कि मतलब 17 डेज नॉन स्टॉप इतना ट्रैवल भी करो, इतना कैमरा चार्ज करो, इतना सारे चीजें भी करो, एंड देन सिर्फ एक सफिशिएंट अमाउंट. ऑब्वियसली टू बी फेयर, दिस वाज नॉट अ फेयर प्राइस टू बी पेड फॉर 16-17 days, बट स्टिल वो अमाउंट मिलना इतने मेहनत करने के बाद, हाउ वाज दैट फीलिंग? पहला पेड चेक था तो अच्छा ही लगा. डू यू Obviously, डू यू डू यू थॉट कि कुछ और मिल सकता था मुझे, या यू वर जस्ट सैटिस्फाइड विद लाइक 16-17 डेज में ठीक है I फाइन? was happy. I was actually happy actually. This was for the first time I actually witnessed by football from very close. हम्म, Like बहुत सारे लोगों को मैं एकदम closely जानने लग गया. I see कि like how it works and all. Like हम्म, lots of professional football players used to come there. As a chief guest भी I League के ISL के बहुत सारे players आते थे. It was हम्म, like अरे यार सही है. I saw हम्म, the competition. It was really good for like much better than what I used to see in the childhood. Like इधर राइट, एरिया में कुछ भी टूर्नामेंट होता था, it used to be much better and professional than that. So I was like, चलो इसी में थोड़ा और देखते हैं. right. So for the listeners who don't know, I League is the Indian league and ISL is the Indian Super League, which is associated with football. AIFF के tournament से ये, and Durand Cup is also the oldest tournament, oldest football tournament in India. So basically, एशिया. in Asia, so sorry, Asia. या So Adesh,
द थिंग इज कि फुटबॉल सेंट्रिक हो गया स्पोर्ट्स फोटोग्राफी फॉर यू. सो डिड यू फाइंड इट कि बहुत सारे असाइनमेंट्स यू डिड ऑफ फुटबॉल, तो बेसिकली दूसरे जो स्पोर्ट्स है वर दे ट्राइंग टू अप्रोच यू एट दैट टाइम, या फिर एक नीश पकड़ के रखा? बिकॉज एक ऐसा होता है जैसे फिल्म मेकिंग यू आर एसोसिएटेड इन, सो इफ अ कैरेक्टर प्लेज अ विलन, सो उसको रोल्स भी वैसे ही ऑफर होते हैं जो विलन वाले होते हैं इन फ्यूचर. सो जैसे असाइनमेंट यू स्टार्टेड वो विद फुटबॉल एंड देन यू वेंट डीप इनटू फुटबॉल एंड बहुत सारे मेजर टूर्नामेंट्स फुटबॉल के यू कैप्चर्ड एंड यू कवर्ड. तो ऐसा कुछ था कि सिर्फ फुटबॉल सेंट्रिक ही प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, या यू वर गेटिंग ऑल द असाइनमेंट्स एज वेल, ऑल डिफरेंट स्पोर्ट्स? लाइक बाकी के स्पोर्ट्स भी आई यूज्ड टू गेट इट, इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ फुटबॉल ही. हाँ, नो डाउट फुटबॉल में ही मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लाइक बहुत सारे क्लाइंट्स वैसे ही है कि फुटबॉल फील्ड में ही है, बाकी के स्पोर्ट्स में भी मिले हैं. एंड आई रिसेंटली डिड एन असाइनमेंट फॉर एनबीए इंडिया, लाइक नेशनल बास्केटबॉल. आई डोंट नो एग्जैक्टली द फुल फॉर्म, सॉरी अबाउट दैट. कोई बस नहीं. मुझे नहीं, आई एम जस्ट सेइंग if the head of NBA is looking at it, and please, I'm sorry. But yeah, I recently did it for them. It was a basketball assignment, and it was really fun. Like, I've obviously, if I get any chance to shoot any other sports, I'll do it. It's not like मैं नहीं करूँगा भी. But the thing is, इतना साल से फुटबॉल में हूँ, इतना साल से देख रहा हूँ, I enjoy it, and I'm like समझता है गेम अच्छे से, तो मुझे मजा आता है फुटबॉल में. राइट. तो अभी यू पॉइंटेड आउट नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन एनबीए, ठीक है? तो एनबीए शूट करना और फुटबॉल में शूट करना, व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट इज द डिफरेंस? या बास्केटबॉल, अभी ऑब्वियसली फुटबॉल इज अ 11 प्लेयर्स खेलते हैं एंड बड़ा बड़ा फील्ड रहता है टू कवर एंड स्टफ लाइक दैट, मेनी मेनी की मूवमेंट्स होते हैं. बास्केटबॉल में भी होते हैं, नो डाउट. बट व्हाट डू यू फील इज द difference while capturing a football game and a basketball game? डिफरेंस तो भी कैसे बताओ, लाइक both the sports are completely different from each other. Exactly. Exactly. Basketball is like extremely rapid fast, like you have a really small ground, and वही Mhm. small छोटे से ground में एकदम फट 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 कुछ ना कुछ हो जाता है. like Right. अचानक से किसी ने फाउल किया, किसी को पॉइंट मिला, and it's really challenging actually because इतना साल से I used to do football and all of the sudden sports change किया, थोड़ा difference है. But yeah, I think so. I'm used to football, so मुझे वो easy लगता है शूट करना. राइट. सो आई गेस जो भी काम करते हैं, जो भी ऐसे टेक्निकल चीज रहते हैं, जैसे फॉर एन एडिटर उसका जो सिस्टम रहता है, दैट इज रियली अटैच, ही इज रियली अटैच टू सिस्टम. जैसे फोटोग्राफर्स आर रियली अटैच टू देयर कैमरास एंड दे आर लाइक कि मेरे कैमरा लेंस ने ये कैप्चर कर लिया ना, तो बस दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम माय कैमरा. तो ऐसा कौन सा की मोमेंट्स है इन योर स्पोर्टिंग करियर वेर यू हैव शॉट एंड डन मल्टीपल असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स? तो ऐसा कौन सा था वेर इन it was the best thing which you shot and this is one of my favorite assignments or my favorite photographs, या फिर and the worst also कि ये चीज तो मैंने असाइनमेंट लेके गलती कर दी पर अभी मैंने कमिट कर दिया तो अब जाना पड़ेगा. ऑब्वियसली वी शुड नॉट मेंशन कौन सा असाइनमेंट है, बट रिलेटेड टू व्हाट आई रियली वांट टू नो अबाउट इट. दोनों ही फुटबॉल में है. ओके. वर्स्ट वाला आई कांट से, द आई बेस्ट स्टिल डोंट बेस्ट वांट. मोमेंट. बेस्ट वाला तो लाइक आई एम लाइक अभी कौन सा टेम्पो के अगेंस्ट अंबरनाथ यूनाइटेड का गेम था. एंड द थिंग इज कि द टीम वाज फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स अगेंस्ट देम. आई डोंट नो, लाइक होता है कभी कभी एट एनी गिवन डे कोई भी टीम का कुछ भी रिजल्ट आ सकता है. मे बी इट माइट बी ड्रॉ, मे बी द रिजल्ट माइट बी इन आवर फेवर और देयर फेवर. राइट. So even at the practice match when the team visited Goa, they lost to them. And even in the league game at the away game, they lost to them. And it was a home game, and it was a must-win game. We were a goal down, so we ended up scoring 3 goals the second half. राइट. And I created a reel with only photographs. Like there were around 130 photographs. ओके. And I'll share that thing with you. The link भेज दूंगा. If you want, you can post it on your YouTube as well. But राइट. the thing is कि हाँ, वो मोमेंट देख के ऐसा लग रहा था कि like players भी खुश है, audience were like standing up, giving standing ovation. I can see the smile on the face. I'm like, सही है, मुंबई फुटबॉल ग्रो हो रहा है seriously. Because the thing is पहले कोई पब्लिक आता ही नहीं था देखने को. Even you know, you have played in the national level as well.
ऑडियंस नहीं आता था, अभी आने लग गया है, सो इट्स रियली गुड टू सी दैट। राइट। सो बेसिकली अभी फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स फोटोग्राफर्स एंड ऑल, मतलब यू हैव कैप्चर्ड थिंग्स फ्रॉम योर लेंस, एंड जैसे अभी यू हैव मेंशन्ड कि पहले ऐसे नहीं होते थे, क्राउड नहीं आते थे, ऑब्वियसली आई हैव आल्सो प्लेड, सो आई नो सर्टेन थिंग्स। एंड अभी जैसे क्राउड आ रहे हैं, ऑब्वियसली अंबरनाथ यूनाइटेड, आई गेस दे प्लेड द होम गेम इन कुपरेज, राइट? तो यप यप। कुपरेज में भी पब्लिक आना, इतना इतना क्राउड आना इज अ ह्यूज थिंग ऑल्सो। एंड अंबरनाथ यूनाइटेड इज रियली विनिंग हार्ट्स ऑफ पीपल ऑल्सो देयर इन मुंबई। So basically, according to you, what has changed over time? Like in terms of photography, also in terms of the teams being serious of a sports photographer, in terms of players को तो obviously photographs तो चाहिए ही था, but eventually the managers, the management, जिस तरीके से जो sports photographers को देखते थे, क्या वो पहले अलग था, अभी अलग है? अभी तो काफी अलग है। पहले तो दे वर लाइक कंप्लीटली फोकस्ड ऑन द गेम, एंड दे वर लाइक भाई ये सब चीज छोड़ो, तुम लोग गेम पे ध्यान दो, बी फोकस्ड। इवन दे वर रियली स्ट्रिक्ट। नाउअडेज कैसा हो गया है कि मुंबई से भी क्लब्स आने लग गए हैं आई लीग का, जैसे किंग एफसी गया, बनात इज प्लेइंग फॉर आई लीग सेकंड डिवीजन। सो द थिंग इज कि दे सी कि हाँ मतलब इफ तेरा तुम्हारा क्लब का ब्रांडिंग करना है, there has to be like photographs post on the social media of the page, like at least social media run करने वाला भी कोई रहेगा, so it's fine. So media plays a most important role in that, and Right, I think so बहुत सारे क्लब्स को ये चीज मालूम पड़ता है, not only एल डिवीजन, बीट थर्ड डिवीजन, सेकंड, फर्स्ट, बीट एनी right, right, क्लब, if you see almost every club has their social media page, and it's really good for them also, because आगे जाके बहुत right, काम आ सकता है right, इन्हें right, क्लब्स को भी आगे बढ़ने के लिए। right. It's like a portfolio as well for clubs and Yeah, we can say that। but फॉरेन में तो yeah, yeah, continue, continue. Yeah. ऐसे फॉरेन क्लब्स में तो आई सी की मतलब हर ऑलमोस्ट हर एक क्लब का सोशल मीडिया पेज है। इट वाज नॉट यूज्ड टू बी लाइक व्हेन यू यूज्ड टू प्ले, वो टाइम पे भी बहुत टीम्स लाइक 80% ऑफ द टीम स्टूडेंट यूज्ड टू हैव द सोशल मीडिया Obviously, yeah, पेजेस। अभी 80% ऑफ द टीम्स हैव द सोशल मीडिया पेजेस। right. इट्स So लाइक what has changed? लाइक Lot has changed. Like lot has changed. So basically, अभी ऐसा है that you are associated with the team. तो कभी कभी like for Ambernath United for example, so if you are an Ambernath United sports photographer, तो you have to cover just Ambernath United players and stuffs like that, right? तो ऐसे या कुछ teams रहते हैं जो जिनके साथ you are associated, but ऐसे leagues के साथ भी you have associated wherein the league organizers have called you. So what is more challenging, shooting and capturing for the leagues or for a specific team? फॉर अ लीग ऑब्वियसली, बिकॉज एक दिन में 6 गेम या 5 गेम शूट करना इज नॉट एन इजी टास्क। यू हैव टू लुक आफ्टर ईच एंड एवरीथिंग, इफ यू मिस समथिंग बहुत गाली पड़ती है भाई। And you have to be ready for all that galis and all that criticism from the organizers, or like it's not that easy, especially Mumbai jaisa city mein, if something like all of the sudden summer के बीच में बारिश गिर गया, बहुत प्रॉब्लम होता है। अभी समर वेकेशन है, ऑब्वियसली यू नो हाउ हॉट इट इज इन इंडिया। Right, ऐसे में एस्ट्रोटर्फ पे इफ यू आर शूटिंग इट्स रियली टफ, right, especially for the league, because पूरा दिन वहाँ पे बैठना पड़ता है। right, So it's much more challenging for the league, and you have to keep each and every data of the match. right. So is the preparation strategy different? Abhi, obviously, if you're shooting with a league, do you like jot points or have a gist कि मैं ये shots लूंगा, वो shots लूंगा, या फिर when you're with a team, do you do that? So preparation strategy, is it different when you're shooting for the league and for the team? हाँ we can say थोड़ा बहुत तो अलग रहता है, बट मेरा काम करने का मतलब ऐसा है कि चलो भाई देखते हैं क्या होता है, मैच में ऐसा होगा कुछ ऐसा कर लेंगे। हम कंप्लीटली लाइक बोलते हैं ना, इम्प्रोवाइज ही करते हैं वहां पे भी। Mm-hmm. इट्स नॉट लाइक हाँ भाई स्क्रिप्ट ऐसा हम लोग लिखा है, दिस इज द शीट वी हैव प्रिपेयर्ड, इसको ही फॉलो करना है। हमेशा ऊपर नीचे होता ही है, एंड इट एंड्स अप गिविंग अस गुड रिजल्ट। Exactly, exactly. So, अब एक चीज रहती है that you always give us the final output of the photographs. You don't give us the clutter. तो ऐसा बहुत सारा clutter photographs भी रहेंगे या raw photographs भी रहेंगे जो you would be like fucked कि इतने photographs है, 1,000, 2,000, 3,000. So what is the major challenge you faced with a league or with a team जहाँ पे you were like there are 10,000 photographs or there are so many of photographs I need to do and सब अच्छे हैं. So इस बीच में what do you do?
share all of them to them. So that's the रहो, thing. तुम लोग भी खुश रहो, हम भी खुश रहेंगे भाई. Exactly. So basically, what is the main and major challenge of being a sports photographer for you? What's the major challenge in your life as a sports photographer? या तो it's getting assignments more. अभी basically sports photography ऐसे word of mouth से ही जाता है, या फिर they look at your portfolio, और they resume तो इतना देखते नहीं है as for a I'll be sport. honest, Word of mouth होता portfolio, है. resume देखता ही नहीं है अभी कोई. If you know me very well, okay, and you want a photographer and you don't know anyone else, and Right. you know कि हाँ मैं ये field में हूँ, तो you just call me. Like that's how it works. Like if resume वगैरह वाला scene है तो it's really good enough. Right. बट कुछ जगह पे ऐसा ही है कि लाइक तू अपना भाई है, आजा चल शूट कर ले. लाइक एक्चुअली बहुत जगह पे ऐसे ही होता है, ऐसे ही स्टार्ट होता है and आगे जाके अगर वो भी ग्रो साथ में कर जाए तो वो जर्नी बहुत ही मेमोरेबल रहती है. राइट. सो ऐसे बहुत सारे अभी मेजर असाइनमेंट्स तो हम लोग ने बहुत सारे बात की ही है, मेजर असाइनमेंट्स, बट देयर वुड बी सम बिलो द लाइन वाले असाइनमेंट्स आल्सो जो विच वर नॉट सो मेजर, जो शायद गुड फेथ में किया होगा या फिर कम पैसों में किया होगा, बट वहां पे द सेटिस्फैक्शन लेवल वाज रियली गुड. तो ऐसा कोई असाइनमेंट्स है वेर इन यू वर रियली हैप्पी डूइंग दिस, कि ठीक है इट वाज नॉट मेजर बट अ गुड एक्सपीरियंस, या फिर एक गुड 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 असाइनमेंट हुआ, गुड प्रोजेक्ट वर्क हुआ? किया है ना, काफी बार किया है भाई. इनविंसिबल्स का किया है. इनविंसिबल्स यूनाइटेड हो गया, SG5 हो गया, शौनक इसका उसके टीम के लिए. लाइक यू गाइस आर लाइक बहुत सालों से जानता हूँ तुम लोग का कितने दोस्त हो. You guys call me, and if I'm available, then surely I'll come and shoot. It's not a big problem for me. Right. So It's basically, completely fine. Invincibles United, if you follow our page on Instagram, Invincibles United, तो वहाँ पे mostly major of the shots जो है वो आदेश ने ही लिए है, photographs, and also we have one more sports photographer दिव्येश. तो वो और आदेश, ये दोनों के मदद से ही जो भी सोशल मीडिया पे चीजें आए हैं वो आए हैं, एंड ऑल्सो रोहन माने जो हु इज द को-फाउंडर ऑफ इनविंसिबल्स, वो पोस्ट करते रहते हैं. सो इनके वजह से आया, एंड SG5 शाउट आउट टू देम एज वेल, शौनक घुरपड़े, बिकॉज ही इज ऑल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ गुड वर्क. बहुत सारे अच्छे सेंटर्स उसने ओपन किए हैं. तो या सो ये सारे बहुत माइनर असाइनमेंट्स भी चीज हुए जहाँ पे सेटिस्फैक्शन मिली है अलग लेवल पे. सो फोटोग्राफी में बेसिकली अभी तो कोर्सेज भी आए हैं, अभी तो बहुत सारे लोग सिखाते भी है कि फोटोग्राफ कैसे करना है, लाइटिंग कैसे होनी चाहिए, शटर स्पीड, ISO, ऑल दीज थिंग्स सिखाते हैं लोग. तो इज देयर अ मेजर थिंग लाइक टू बी अ स्पोर्ट्स फोटोग्राफर, हाउ टू गाइड, या फिर एक एक हैक ऐसा कुछ है, या इट इट इज विद टाइम? I think so. It is with time. Hack तो नहीं बोल सकते. Like basic सी चीजें होती है. You have to remember one or two things. You have to remember. You follow that thing and keep practicing. एकदम काम अच्छा हो जाएगा and you'll be like अरे भाई अपन ही भगवान है. Any of a sports photographer who is your inspiration or something like that, any role model in the sports industry or anyone as such who you look up to, कि मेरे को ऐसे शॉट्स लेने हैं या फिर ऐसे तरीके से शूट करना है या ऐसे तरीके से कैप्चर करना है, anyone as of that caliber? Not only one. There are like few more. Okay. Few of them, and all of them are good friends of mine. Okay. Like one of them used to work for Football Counter. Mm-hmm. He is currently working for Kolkata Knight Riders, Okay. the IPL, Okay. and there are few more of them. Like You they're want good to friends mention of his mine. name? हाँ sure. The KKR में जो है इसका नाम है निखिल पाटिल. Nikhil Patil, shout out to you. And other one is Akash Malvanko. Obviously, he's currently my colleague at Amranath United as well. Okay. So and और भी है ऐसे. I don't exactly know their name. Like I just met them for a One moment shot. or for a day. Mm-hmm. But I've seen their work and I'm like अरे भाई बहुत सही है यार. Like ये थोड़ा क्रिएटिव वे है काम करने का. हर किसी का अलग अलग स्टाइल होता है. Right. Right. So what is your best thing to shoot? Basically, is it player celebration? Is it warm up sessions? Is it practice sessions? Is it coach's temperament? What is the best thing which you like to shoot when you're working, when you're on an assignment? Uh,
It can be anything, like celebration भी हो सकता है, coaches का भी कुछ हो सकता है, like like honestly speaking, coaches भी photos के लिए बहुत खुश होते हैं, like if any of the photos, like उनका कोई photos post होता है, they are really happy. Obviously celebration रहेगा, a team is scoring the goal, what else, what more do you want, a Right. team is winning. Right. आई गेस लास्ट टू क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन सबसे पहले ये चीज आता है कि स्पोर्ट्स फोटोग्राफी के बारे में अच्छी चीजें ही हाईलाइट की हम लोग ने, अच्छी चीजें ही बात की है, बट there's a dark side of every industry. So what do you think is a dark side of the sports photography industry? डार्क साइड तो देखो, इसमें इतना भी कुछ नेगेटिव नहीं है, लाइक इफ यू एंजॉय द स्पोर्ट्स विच यू आर शूटिंग, यू वोंट फाइंड एनी नेगेटिविटी इन। हाँ, ऑब्वियसली डार्क साइड एक कह सकते हैं कि यू रियली गेट अंडरपेड, यू वोंट गेट लाइक जितना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, या मे बी डिले भी हो सकता है पेमेंट का, दैट इज द मोस्ट कॉमन थिंग, नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स बट बहुत सारी जगह पे। Mhm. बट यू रियली गेट अंडरपेड, और समटाइम्स डोंट गेट, लाइक सपोज किसी का मैंने शूट किया है, they don't give credits and use the photographs without permission. That's a secondary thing, but still कभी कभी ऐसा लगता है भाई मेरा मेहनत है, मेरा मेहनत पे लोग पैसे कमा रहे हैं, बट ठीक है, इट्स वन ऑफ द डार्क साइड, बट इट्स फाइन। एक पॉजिटिव वे में इफ यू लुक एट इट, यू कैन सी भाई बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे मेरा फोटो पोस्ट हुआ है, दैट्स वन ऑफ द पॉजिटिव थिंग। Right. Right. So एक लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी वाइंड दिस अप अ शॉर्ट इंटरव्यू। लास्ट क्वेश्चन ये है कि इफ फॉर नाउ अभी जो सुन रहा है या मुझे स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है या मुझे शुरू करना है, सो कैन यू गिव अस अ स्टेप गाइड कि कैसे शुरू कर सकते हैं, किनको मिल सकते हैं, किसको मिल सकते हैं, किसके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, किस तरीके से जा सकते हैं टू गेट टू द लेवल विच यू आर इन राइट नाउ? टू बी ऑनेस्ट, फर्स्ट थिंग आई विल से इज बेसिक से एक छोटा सा कैमरा खरीद लो, एंड एक सेकेंड, ओके, सो एंड सेकेंड थिंग इज कहीं ढूंढने का जरूरत नहीं है, wherever you stay, आसपास कुछ भी स्पोर्ट्स का इवेंट कुछ भी शूट होता है, और else your friends are going somewhere out to play, just tell them you want to shoot something and वैसे ही शुरू करो। शुरुआत छोटे लेवल से ही होती है, जीरो से ही शुरू होता है सब कुछ भाई, डायरेक्टली सीधा 1 करोड़ नहीं आ जाता भाई किसी के भी पास ऐसे। राइट। 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 इवन यू गो टू केबीसी, यू सी भाई शुरू से शुरू होती है, इफ यू कीप वर्किंग हार्ड, लाइक स्टेप बाय स्टेप यू गेट टू दैट 1 CR मार्क, दैट्स हाउ इट इज। Right. And we also strive to educate people who through our podcast. तो ऐसा कोई टेक्निकल सिस्टम है जो एज अ स्पोर्ट्स फोटोग्राफर को आना ही चाहिए, जैसे कोई जैसे फॉर एग्जांपल एडिटर्स को अडोब प्रीमियर प्रो या कुछ ऐसी चीजें आनी चाहिए, या फिर फोटोग्राफर्स को लाइट रूम आना चाहिए, तो ऐसे कोई टेक्निकलिटीज है जो स्पोर्ट्स फोटोग्राफर्स को आनी चाहिए? और थोड़ा फ्रेमिंग वगैरह थोड़ा सीख लो, बस दैट्स इट, बाकी तो सब अपने आप ही सीख जाएंगे, सही। रटा हुआ करके कुछ मतलब नहीं है, थोड़ा बहुत फ्रेमिंग सीख लो, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, सही है। बाकी एंड सब तो अपने आप ही सीख जाएंगे। राइट। एंड फॉर अ फ्रीलांस फोटोग्राफर जो शुरू कर रहा है, एक पे स्केल इफ मैं सुन रहा हूँ एंड आई डोंट नो कि प्राइस पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट रहता है ना, मुझे हायर पॉइंट पे भी नहीं जाना है, मेरे को लोअर पॉइंट पे भी नहीं जाना है, आई शुड गेट व्हाट आई डिजर्व। तो अकॉर्डिंग टू यू हाउ मच डू यू सजेस्ट फॉर अ फ्रीलांस फोटोग्राफर टू चार्ज फॉर एन असाइनमेंट टेंटेटिवली? डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंस, लाइक इफ ही तो रियली हैज अ बिगिनर है। गुड, बिगिनर है तो आई थिंक सो, आई डोंट नो द अमाउंट, डिपेंड्स कि सामने वाले का बजट भी क्या है, कभी कभी बजट इज इतना बजट रहता है कि भाई दे आर लाइक भाई पे ही नहीं कर सकते, बट तुझे एक्सपोजर मिल जाएगा, दैट्स हाउ इट इज। राइट। हाँ, ऑब्वियसली फ्री में काम करना किसी को अच्छा नहीं लगता, इफ यू गेट समथिंग आल्सो इट्स completely fine। शुरुआत के दिनों में आई डोंट थिंक सो यू शुड कंप्लेन, बट आगे जाके इट बिकम्स अ लाइक कैसा, हाँ भाई फ्री में नहीं करना चाहिए, शुरुआत के दिनों में कंप्लेन नहीं करना चाहिए, यू फोकस ऑन योर वर्क, दैट्स इट। राइट। So I guess, guys, this is the wrap of a short interview with Aadesh Kenia, who's a sports photographer for like 6 years now, 6 years and counting, and maybe more. Lot of major projects, lot of major assignments coming in his way as well. And I hope with this short 40 minutes interview, maybe you found out how हो गया 40 मिनट। हो गया रहेगा, 30-35 minutes तो हो गया होगा. So you ऐसा लग रहा है शुरू होते ही खत्म हो गया।
you would have found out how sports photography industry works. And maybe once we'll plan a proper podcast about how to be a sports photographer, and we'll get to you all. So thank you for everyone who is watching us and listening to us. And follow us on Instagram. Aadesh Kenia ka Instagram ID would be in the description as well. So assignments, bookings, anything, Aadesh बहुत busy रहता है, so book in prior. So Aadesh, thank you for your time, and I'm most it was welcome. really a good discussion. Yeah, yeah. Thank you so much. Thank you.